So new shot from the center. Goa Police has won the toss, deciding to bat first.
check. So here we go with the second match. Do I do, do or die match for both the teams. As a winner will be qualifying at the second position at the points table in their respective group. So far, three teams that have qualified for the semi-finals. In the Group 1 table toppers, Salgaonkar Cricket Club. In the Group B, it's Nageshi Youth. And the third team to qualify is Warriors. So now the match is going on between Darsaka Stars and Goa Police. Meanwhile, a flick of wrist and the ball has been guided towards the fine leg region. Nilesh Sachin Tendulkar gathers the ball and puts it inside the ground. So welcome boundary, just to boost the morals of the batting team, and what a lovely elegance flick of wrist to guide the ball towards the boundary rope. With that, score moves to 6. Felix Dias bowling from a rail wicket end. Another good delivery after delivering those extras in the initial part of this over. Finally, getting the proper line and length, Felix Diaz does the corrections and nerve on to the target, I must say. Making the plot little difficult for the batter. Another good delivery. There was a chance of catch, just short of the fielder at the mid wicket. Didn't time well, wanted to guide the ball towards the mid wicket, not getting the proper sweetest part of the bat. And that makes the ball to travel safely, a bounce to the mid wicket fielder, which is inside the circle. Another good delivery, swing and a miss. This is the length every bowler tries to deliver initially, where you get a hint of swing, inviting the batsman to go after the ball. This is a wonderful correction done by Felix, and now on to the target. Another good delivery, lovely swing chance of a catch. Fielder from the deep waits on for the ball to land safely. So a single that will take the total to 7 after the completion of 1 over. So this is going to be a good contest as it's very decent day. No clouds to be seen on top. Bright sunlight and definitely a putter wicket. Little bit of grass on it that gives something for the bowlers as well. So this is going to be a very good contest. A beautiful ground, a beautiful tough wicket where every player from Goa wishes to play on this track. And now this is the decider. And we are going to get the fourth team after the completion of this match. So definitely there's a change of the bat that has been asked by Avinash Alex W. So on the proper willow in his hand.
So let's see how the things will progress from here on. Sunil Varekar, tallest guy from the side, with the ball in his hand from the Mathigad end. Avinash onto the striking end. Luzna, ball takes a leading edge, travels away from the fielder at the shot at the third man. And that's the boundary. The lucky bat provides a boundary for Avinash as well as for his team. And that takes the team total to 11. Definitely different strategies will be applied. A tall guy, that was a Luzna, wanted to deliver a Yorker, not getting it properly. Another good deal, beautiful strike. Fielder is placed but away from the fielder. And there she goes. A bounce travels the boundary rope. Consecutive boundaries from the bat of Avinash. Change of bat is working for Avinash. Have struck two beautiful boundaries. Let's see whether he is about to change the bat. Looks to be, because maybe some problem with the willow. So change in the willow, and let's see whether the things are going to be same as we have seen at the numerous occasion. When a willow has been changed, definitely to have costed the batsman. Meanwhile, defensive drive, I must say, straight towards the mid-off region. No chance of any run, resulting in a dot ball. So two boundaries have come from the consecutive deliveries that have been bowled in this over, and now followed by a dot ball. But Goa Police is a team, once they get the momentum, they are not going to stay quiet for long. Is it the silence before the storm? Definitely swing of the bat, a lovely line bowled by the bowler, inviting the batsman to go really after it, not getting any chance, resulting in consecutive two dot balls. But the player, the batter who are at the moment on the ground are not going to be quiet for a long time. Another lovely drive straight to the fielder. Meanwhile, a single is the call, and definitely they have taken a single. So with a single, score moves to 16. Power plays on as the match is ready to 18 overs after both the captain have agreed. 5 overs will be power play. Still, both the batters are a little quiet at the moment, but the storm is on its way. Another pull shot in act. Ball is racing away from the fielder. Fielder running very quickly. Is it going to be a couple of runs? Yes, it's a call, and definitely equally responded by partner. That concludes over number 2. So after completion of 2, score is 18 without any loss of wicket. And now for the further details, over to Sanket Gaonkar. दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के, और बहुत ही बढ़िया शुरुआत कही जाएगी। 2 ओवर अब तक यहाँ पर हुई, और एक डिसेंट अब तक स्कोर बना चुकी है गोवा पुलिस की टीम। गोवा पुलिस और दरसका स्टार्स के बीच ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इस बार दिशा से भटके
लेग स्टंप से दूर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल में, और इस एक रन को जोड़कर स्कोर स्कोर हुआ है 19। फेलिक्स डायस अपनी दूसरी ओर इस बार बढ़िया गेंद सटीक लाइन और लेंथ के साथ रचनात्मक तरीके से यहाँ पर की गई है गेंद, और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेली डिफेंसिव शॉट, कोई रन नहीं। तो पिछली 2 ओवर जो थे थोड़े से महंगे रहे थे, बाउंड्री आई थी, लेकिन इस ओवर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत था। हालांकि पिछली गेंद वाइड रही थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया वापसी अगली ही गेंद पर। इस बार आगे आए, लेकिन बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ की गई गेंद, कोई मौका नहीं। एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे क्योंकि 2-3 गेंदें जो है डॉट आई, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर हटाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लास्ट टाइम में बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट फेलिक्स डायस द्वारा। और फिर एक बार दिशा से भटके, फिर एक बार जाती हुई लेग स्टंप से दूर, वाइड का इशारा आता हुआ दूसरी वाइड इस ओवर के फेलिक्स डायस द्वारा। 2 बल्लेबाज अविनाश घाउस और स्वप्निल मलिक कमान संभाले हैं बैटिंग के। फिर एक बार बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं यहाँ मिलेगा। तो ये 18 ओवरों का खेल आज होगा, क्योंकि जब 5:30 के बाद यहाँ पर रोशनी कम हो जाती है, इसी की बदौलत 2 ओवर की कटौती यहाँ पर की गई है ऑर्गेनाइजर द्वारा। बहुत ही बढ़िया ओवर, जो मोमेंटम पहले 2 ओवर में मिला था उस पर थोड़ी सी रोक लगाती हुई यहाँ पर फेलिक्स डायस। बहुत ही बढ़िया ओवर, हालांकि 2 वाइड जरूर गई इस ओवर में, लेकिन बाकी जो गेंदें बहुत ही बढ़िया सेटिंग लाइन और लेंथ के साथ, कोई यहाँ पर मौका नहीं बड़ा हिट खेलने का बैट्समैन को। इस बार हवा में जरूर गेंद, लेकिन कोई मौका नहीं, सर्कल के अंदर था फील्डर और उसी का फायदा उठाकर मिड विकेट क्षेत्र में जड़ दिया है ये चौका अविनाश घाउस द्वारा। खामोश रखा था इस ओवर में, लेकिन आज इस गेंद पर हाथ खोलने का थोड़ा सा मौका मिला, और उस मौके को दोनों हाथों से उठाकर एक चौका यहाँ पर अर्जित करके जो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बना था वो हटाने में कामयाबी मिली अविनाश घाउस को। और इस अपने पारी में अब तक 4 चौके लगा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, एक पार्टनरशिप यहाँ पर पनपती हुई। 24 रन लगे हैं बोर्ड पर, तीसरे ओवर है प्रगति पर। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हिट, यहाँ पर दूसरा रन जी जरूर मिलेगा। तीसरा रन यहाँ पर लेते तो मुश्किल में हो सकते, लेकिन 2 ही रन से यहाँ पर संतुष्ट। एक वहां पर डायरेक्ट हिट लगने की वजह से बॉल जो है दूर गई, और उसी का फायदा यहाँ पर उठाकर एक रन यहाँ पर चुराया, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 लगा है बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला, जो इस मुकाबले को जीतेगा वही आगे जाएगा। और यहाँ पर सुबह जो मैच हुई थी उस मैच के हीरो तुषार सावंत यहाँ पर पधारते हुए, जिन्हें 5 विकेट अपने स्पेल में लिए थे और एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था अपने टीम को यहाँ पर जीत दिलाने में। सुनील वेरिकर की बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ के साथ पहली गेंद थोड़ी सी उछली, और यहाँ पर बल्लेबाज जो थे उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से गेंद जो है आएगी। इस बार थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया, पीछे फील्डर मौजूद, केवल 1 रन यहाँ पर मिलेगा, और स्ट्राइक दी यहाँ पर
स्वप्निल ने अपने पार्टनर अविनाश को, जो कि आज बहुत ही बढ़िया टच में अब तक दिखाई दे रहे हैं। 4 चौके लगा चुके हैं अब तक इस पारी में और बढ़िया पार्टनरशिप चलती हुई दोनों के बीच। 27 रन लग चुके हैं अब तक बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। इस बार थोड़ी सी नीचे रही और कीपर से भी थोड़ी सी मिस, उसी का फायदा यहाँ पर उठाकर 1 रन। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और ऑफ स्टंप से दूर गई थी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जोड़ा जाएगा टोटल में। सूझबूझ भरी यहाँ पर क्रिकेट दोनों ही द्वारा शुरुआत काफी अच्छी मिली है और इस शुरुआत को कहाँ तक ले जाते हैं देखेंगे आने वाले ओवर में। फिर एक बार ऑफ स्टंप से काफी दूर थी, फील्डर मौजूद। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग, जो रन की आशंका थी उसे समाप्त किया। रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर जिस तरह से बॉल पर गए, फील्डिंग की जो यहाँ पर थोड़ी सी आशंका बनी थी रन की, वो यहाँ पर खत्म की और बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ बॉलर को। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन स्वीप की और फाइन लेग की दिशा में गेंद गई 4 रनों के लिए। तो गति में यहाँ पर मिश्रण किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ा अविनाश ने और स्वीप किया, गेंद पहुंचा दी सीमा रेखा के बाहर और 5वां चौका आता हुआ अविनाश के बल्ले से। स्वप्निल, इस बार स्वप्निल के बल्ले से आया ये शॉट। 4 चौके आई है अविनाश के बल्ले से और उसी पार्टी में जुड़ते हुए यहाँ पर स्वप्निल ने भी अपने हाथ खोले और फाइन लेग की दिशा में एक बहुत ही बढ़िया सुंदर चौका अर्जित किया पिछली गेंद पर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट, देखते हैं कितने रन यहाँ पर मिलते हैं और सीधा सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए पिछली गेंद पर चौका और इस गेंद पर जो शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी पूरा फायदा यहाँ पर उठाया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पार्टनरशिप पनपती हुई, एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर संभालते हुए 1-1, 2 रन जोड़ते गए और जब जब मौका मिलता है इस तरीके से शॉट यहाँ पर आ रही है और इसी के बदौलत एक बढ़िया टोटल की ओर बढ़ते हुए 39 पर पहुंचा स्कोर। चौथी ओवर है प्रगति पर, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रही है आगे टीम गोवा पुलिस। सुनील वरेकर पहली ओवर में भी थोड़े महंगे साबित हुए थे, 11 रन दिए थे और ये भी बहुत ही लंबा ओवर यहाँ पर घट्टा हुआ। फिर एक बार हालांकि शॉट बहुत ही बढ़िया था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं और आखिरी गेंद बढ़िया गेंद और इसी के साथ यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त। 39 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। चार ओवरों के बाद समाप्ति के बाद 39 लगे हैं बोर्ड पर और यहाँ पर बॉलिंग में चेंज संकेत मोरजकर को यहाँ पर लाया गया है क्योंकि जो 2 बॉलर यहाँ पर इस्तेमाल किए थे कप्तान ने थोड़े से महंगे साबित हुए,
उसी के बदौलत यहाँ पर संकेत मुरस्कर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया गेंद, पहली गेंद सटीक लाइन और लेंथ के साथ, और अविनाश ने डिफेंसिव तरीके से ये शॉट खेले। हालांकि जानते हैं कि कहां पर प्रहार करना है, किस गेंद पर बड़ा हिट लगाना है। इस बार थोड़ी सी नीचे रही गेंद और सीधी गई कीपर के पास। शुरुआत काफी बढ़िया, दो गेंदे दोनों ही डॉट। जो मोमेंटम यहाँ बना था उस पर थोड़ी सी रोक यहाँ पर लगाई है संकेत ने। देखेंगे आगे वाली गेंद किस तरह की होगी संकेत की। इस बार फिर एक बार अपने ही फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग। तो तीन गेंदे लगातार डॉट गेंदे, जो 4 ओवर का खेल रहा था बढ़िया रहा था, लेकिन 5वीं ओवर जो संकेत मुरस्कर को सौंपी गई, बखूबी अपने कप्तान के भरोसे पर यहाँ पर उतरते हुए संकेत मुरस्कर। इस बार हवा में गेंद, फील्डर बॉल के नीचे देखेंगे कहां तक ये जाती है गेंद, और ये 4 रन का इशारा आता हुआ मौका हालांकि बना था। फील्डर गए थे लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर रही, और एक मौका यहां पर जरूर विकेट लेने का था। जो पार्टनरशिप यहां पर पनप रही है, उस पार्टनरशिप को तोड़ने के का एक मौका यहां पर जरूर बनाया था संकेत मुरस्कर ने, लेकिन थोड़ी सी दूर रही बॉल फील्डर से, और उसी की बदौलत 4 रन यहाँ पर जुड़े हैं टोटल में, और इस 4 रन को मिलाकर 43। ये बढ़िया शॉट, पीछे डीप में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन को जोड़कर 45वां है स्कोर, सॉरी 44। यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्ड कीपर द्वारा, और लेग बाय का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, और इसी के साथ यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त। 45 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। बॉलिंग में चेंज, सत्येंद्र तुरी यहाँ पर बॉलिंग मार्क पर होंगे। एक बढ़िया शुरुआत तब तक मिली है गोवा पुलिस को। 45 रन लगा चुके हैं बोर्ड पर 5 ओवर के बाद, और अविनाश और स्वप्निल दोनों ही मौजूद है क्रीज पर, और अविनाश गावत जो है ज्यादा आक्रामक दिखे इस 5 ओवरों के खेल में, और 5 ओवरों का ये पावर प्ले समाप्त हुआ है, और फील्डिंग में यहाँ पर बदलाव। नीचे रही गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पर स्वप्निल के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन शॉट कवर का खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और सीधी हाथ में जाती हुई गेंद, कोई यहाँ पर मौका नहीं। जो पहले 4 ओवर हुए थे उसके बाद जो 5वें ओवर में थोड़ी सी जो रोक लगी थी स्कोर पर, वही प्रेशर जो है इस ओवर में भी दिखाई दे रहा है। तो संभाल के खेल रहे हैं, जानते हैं कि अगर विकेट हाथ में रहे तो आगे जाकर एक्सलेट कर सकते हैं। इस बार शफल किया और
कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नीचे रह रही है गेंदे। ये बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद और अपील जरूर हुई है, लेकिन लगता है कि नॉट आउट है। और शेखर फटते पंटी में यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट है वो यहाँ पर प्लेयर्स के सॉरी यहाँ पर दिया है, इसलिए वॉरियर्स की जो टीम है वो धन्यवाद देना चाहती है शेखर फटते को। जो रिफ्रेशमेंट जो है वह यहाँ पर दिया गया है शेखर फटते द्वारा। थर्ड मैन की दिशा में वहां पर सर्कल में मौजूद, जब तक ये फील्डर के पास ये गेंद जाती, एक रन किया है दौड़कर कंप्लीट। इस बार स्वीप लगाना चाहते थे, अपील जरूर हुई है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं, अंपायर उत्साह काफी था इस अपील में। उसी के साथ 6 ओवरों का यहाँ पर खेल समाप्त। 47 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। पिछली ओवर सत्येंद्र तूरी की बहुत ही बढ़िया रही, केवल 2 रन दिए। जो एक आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाया था अविनाश और स्वप्निल ने, जो आक्रामक खेल चल रहा था उस पर थोड़ा सा रोक लगाने में मिली है कामयाबी पिछले ओवर में सत्येंद्र को। संकेत मोरजकर की ये दूसरी ओवर, ये बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद और सिर्फ फील्डर बनेंगे दर्शक, बॉल को केवल देख सकते हैं। 6 रन यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार अविनाश के बल्ले से आता हुआ, और उसी के बदौलत ये सिक्सर जो छक्का लगाया 53 50 मार्क का यहाँ पर आंकड़ा जो है 50 का आंकड़ा छू लिया है। और जो थोड़ी सी यहाँ पर रुकावट आई थी या जो रन रेट पर रोक लगी थी इस छक्के के बाद, वापस अपने ट्रैक पर आते हुए। और एक यहाँ पर उसे दिशा में छक्का लगाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन इस बार आई नहीं बल्ले पर, थोड़ी सी धीमी छोड़ी थी हवा में, उसी की बदौलत जो यहाँ पर मोमेंटम था वो नहीं मिला अविनाश को। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी, और यहाँ जब गेंद होती है तो शॉट खेलना थोड़ी सी मुश्किल होता है। और डॉट गेंद, छक्के के बाद बढ़िया वापसी, इस बार बढ़िया तरीके से रक्षात्मक तरीके से खेला और छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस है झोंकते हुए संकेत मुरस्कर, बहुत ही बढ़िया वापसी। 3 गेंदे जो छक्के के बाद है, 3 गेंदे यहाँ पर लगातार डॉट। आगे आकर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन चूके तो ये लाइन जो है यहाँ पर अंत में एडजस्ट की, देखा कि बल्लेबाज आगे आ रहा है, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी संकेत मोरस्कर की, छक्का लगने के बाद बहुत ही बढ़िया वापसी। शॉट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन थोड़ी गति के साथ की थी, जब तक यहाँ पर पॉइंट का खिलाड़ी ये फील्ड करता, 1 रन यहाँ पर चुराया। और 7 ओवरों की समाप्ति के बाद 54 लगा है बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के।
7 ओवरों का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त। 54 लगे हैं बोर्ड पर और महत्वपूर्ण बात है कि अब तक विकेट यहाँ पर नहीं खोई है गोवा पुलिस ने। थोड़ी सी नीचे रही गेंद लेकिन कीपर द्वारा मिस। शॉर्ट टर्मिनल का खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक फील्ड करता एक रन यहाँ पर दौड़ कर किया कंप्लीट। बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। इस बार थोड़े से सफल हुए और एक रन यहाँ पर दौड़ कर किया है कंप्लीट और स्ट्राइक दी है अपने पार्टनर अविनाश को। पिछली ओवर बहुत ही बढ़िया रही थी सत्येंद्र की, केवल 2 ही रन दिए थे। इस बार बढ़िया शॉट, तीर की तरह आ रही है गेंद सीधी कमेंट्री बॉक्स में और जब ये लगी गेंद बॉल पर तो जो आवाज आई तो लिखा था इस गेंद पर 4 रन और कोई मौका नहीं। हालांकि यहाँ पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मौजूद था लेकिन जो गति और जिस स्पीड से ये गेंद आई सिर्फ खिलाड़ी इस गेंद को देखते रहे और गेंद गई सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर एक बार थोड़ी सी धीमी छोड़ी थी हवा में और आगे आकर शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन इन वक्त पर एडजस्ट किया अपने शॉट को और कवर सर पॉइंट की दिशा में गेंद को खेलकर एक रन निकाला। पिछली गेंद पर आया था चौका, इस बार एक रन यहां पर निकालकर स्ट्राइक दी है अपने पार्टनर स्वप्निल को। इस बार बहुत ही बढ़िया थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और सही तरीके से पड़ा और चौके के बाद ये छक्का आता हुआ और ये छक्का जो आया है स्वप्निल के बल्ले से। बढ़िया यहाँ पर दोनों ही पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जब एक चौका लगता है सिंगल लेकर अपने पार्टनर को स्ट्राइक देते हैं और अब स्वप्निल ने उसी में अपना छक्का जोड़कर जो यहाँ पर पार्टनरशिप बन रही है, बढ़िया पार्टनरशिप, उसको आगे बढ़ाने में दोनों का। इस बार फिर एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मौजूद, केवल एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा और 8 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त। 68 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। संकेत मोरजकर अपनी तीसरी ओवर लेकर और यहाँ पर ऑफ स्टंप की ओर सफल होकर लेग स्टंप की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन आई नहीं बॉल और उसी की बदौलत एक रन यहाँ पर मिलता हुआ। लेग बाय का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से, सॉरी बाय का इशारा एम्पायर आता हुआ। फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अविनाश को मालूम नहीं कि गेंद कहां गई, वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन रखा हुआ था और कॉल किया था स्वप्निल ने लेकिन अविनाश को मालूम नहीं थी गेंद कहां गई और उसी का यहाँ पर फायदा मिला, एक रन यहाँ पर अर्जित किया। फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, थोड़ी सी नीचे रह रही है गेंद, जिस तरह की यहाँ पर गति चाहती है वो गति यहाँ पर दे नहीं रही है संकेत और उसी की बदौलत जो बड़ा हिट लगातार लगाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है लेकिन बॉल नहीं आ रही है पल्ले पर।
इस बार हवा में गेंद जरूर, पीछे प्रोटेक्शन नहीं, फील्डर बॉल के पीछे, और ये रेस आसानी से जीत ली है बॉल ने, और एक चौका जुड़ता हुआ इस टोटल में। और बहुत ही बढ़िया, जब जब मौका मिलता है हाथ खोलने का, बड़े हिट यहाँ पर आ रहे हैं, और जब जब अच्छी गेंद यहाँ पर होती है उसे पूरा सम्मान देते हुए, और जब जब रूम मिलता है, मौका मिलता है, हाथ खोलते हैं, और ये चौका आया स्वप्निल के बल्ले से। फिर एक बार खिलाड़ी मौजूद पॉइंट पर, चुस्त तंदुरुस्त, रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। राइटेड गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक की फील्ड करता है, एक रन यहाँ पर किया है दौड़कर कंप्लीट। और उसी के साथ 9 ओवरों का यहाँ पर खेल समाप्त, 75 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। सत्येंद्र तुरी अपनी तीसरी ओवर इस इनिंग की, और 9 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है, 75 लगे हैं बोर्ड पर। और जो आने वाले 9 ओवर है उसमें एक्सलरेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विकेट है अब तक हाथ में गोवा पुलिस के। यहाँ पर थोड़ी स्लोवर छोड़ी थी हवा में, और बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन को छोड़कर 76 हुए स्कोर, तो एक बढ़िया पार्टनरशिप जिसकी जरूरत थी, एक अहम मुकाबला। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधी तीर की तरह जाती हुई 6 रनों के लिए। जिस तरह से मैंने कहा था कि ये पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, जब जब अच्छी गेंदी होती है, एक एक दो दो रन निकालते हैं, और जब जब मौका मिलता है मौके का फायदा यहाँ पर उठाते हैं, और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्ट्राइक, सीधी तीर की तरह बॉलर के सिर के ऊपर से ये गेंद खेली गई 6 रनों के लिए अविनाश द्वारा। अविनाश गांव के एक बहुत ही आक्रामक पारी, और 45 के स्कोर पर पहुंचे, और केवल 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। क्या छक्के से ये 5 रन जो है पूरे करते हैं, या किस तरीके से अपना अर्धशतक यहाँ पर पूरा करते हैं, यहाँ पर निगाह रहे, क्योंकि शुरुआत से ही आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाया है, जब जब मौका मिला है चौके छक्के यहाँ पर लगाए हैं। और इस इनिंग में 6 चौके और 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं अविनाश कावस, 5 रनों से दूर अपने अर्धशतक से। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, हल्के हाथों से खेला, और एक रन यहाँ पर किया कंप्लीट। और छक्के के बाद सूझबूझ भरी क्रिकेट, एक रन हल्के हाथों से लेकर स्ट्राइक थी अपने पार्टनर स्वप्निल को, तो एक रन को जोड़कर 46 पर पहुंचे हैं अपने निजी स्कोर पर, 4 रनों से दूर अपने अर्धशतक से। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन आई नहीं बल्ले पर, मौका था जरूर।
इस बार यहाँ पर हवा में जरूर गेंद, लेकिन शॉर्ट कवर का जो खिलाड़ी था उससे थोड़ी सी दूर। एक रन यहाँ पर उसी बीच किया है दौड़कर कंप्लीट, और 4 रन यहाँ पर चाहिए अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। 40 पर खेल रहे हैं अविनाश कावसर, अपने अर्धशतक से 4 रनों से दूर। क्या इस गेंद पर ये आएंगे, देखेंगे। जी नहीं, थोड़ी सी नीचे रही गेंद, ग्लाइड करना चाहती है थर्ड मैच की दिशा में, लेकिन आई नहीं, चढ़ी नहीं। और इसी के साथ 10 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त। 84 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं हरीश काकुड़कर। Ten overs, 84. So pretty good run rate maintained here by Goa Police. Once again, virtual quarterfinals. The fourth one. We are still waiting for the fourth team. Nicely, watchfully played at the wide along of region. Sanket Moraskar, one of the fast and quick fielders. And look at the throw, straight in the hands of the keeper in the gloves. So 8 more overs left. Wonderful opening stand between both these players. Not a single wicket has been taken yet by Dhadsakhal Stars. They're virtually waiting for quite a long time. They have tried 4 options, and this is the 5th option. They kept him waiting for almost the 11th over. Sanket Moraskar, the off spinner, and the leg spinner Satyendra Turi. Both tried their hands to get a wicket. A wide signal by umpire. Both tried hands to get a wicket, but not the off spinner, not the left arm orthodox were able to have a breakthrough. Slowly and steadily, these guys are reaching towards a 100 runs partnership. Oh, the ball kept low. Try to come down the ground, down the track. As there is a pretty open space up and over the bowler, as long on long off are slightly wide. Good that Goa Police is one of the strongest sides, although Salgaonkar beat them comprehensively. They certainly feel this is very good shot. This is very good shot and good fielding. The legs coming at the right time. Otherwise, once the ball crosses the inner ring, it will have certainly gone towards the boundary ropes for 4 runs. They should feel positive. They have to be positive. Otherwise, if the fielder's body language is negative, then it can turn a score of 140 into 160. And once that 20 runs are scored extra by the batting team, it's very difficult to chase later on. Trying to play a big shot. Didn't get off the meat of the bat, just a single in the cow corner region. But the intent is very good here from both these batsmen. They know that they have played and played very well so far for a good opening stand for their team. They want to carry up with the momentum and the run rate. This is in the air. This should be a catch. Who is going? Keeper says it's mine, and he takes one. Finally, a breakthrough in the 11th over. The change of pace by the bowler does the trick. The batsman
played his shot early, getting a top edge and a good running catch by the wicket keeper. The Sankal Pednekar comes into bowl as a bowling change, and the fifth bowler has picked up the wicket, and that too of Avinash Gaus. Out at the score of 47. Wonderful knock from the all-rounder. We'll see him later on with the ball in his hand. This time a good sweep shot and straight in the hands. So one wicket gets another wicket in the next over. Successive wickets here, and Darsaka Stars are coming back in this match. It was not a wicket-taking ball, but sometimes you tend to give wickets or you get wickets as a bowler of a full toss, and that's exactly the bowler was lucky over there. And both the well-said batsmen, first it was Avinash Gaon W and now Swapnil Malik Baba, both gone back in the pavilion of successive balls is an advantage here, as both the batsmen will be new onto the wicket without being facing a single ball. Mohit Gaukar. This time played nicely down the ground. Sarvanna.
Ashok Rathod, a good bowler, disguises the batsman with his slower off cutters and this leg cutter, similar to what Sunil Narayan does. Once again, played with soft hands. Very sensible batting here from Sanket. He has played and represented Goa in under 25 and he knows the situation in hand. His wicket is very crucial, and left and right hand combination is creating problems for the bowlers and also the captain. They have to rotate the field. It's taking a little bit of time to set the field. Oh, that was almost taken. Good effort there from the bowler. Cannot consider this as a chance. It was very nicely struck down the ground. But athletic players of Goa Police, Ashok Rathod stops it in his own follow through. That's the effort required. You can see the spirit is lifted here from behind the wickets by Ghadi and other players around. So again, this is in the air, but away from the fielder. They want to go for the second half. Slide fumble. The recover in the end. Well, Sanjay Naik. So good intent game. Very close match. You can say certainly one of the best matches. And after completion of 10 overs, the score is 65 for the loss of 2 in 9 overs. So halfway mark of the first innings, another 9 overs left. $65 for 2 in 9. $70 runs required in 54 balls. That's the required runs. So around less than 8 runs per over, 7.8, 7.85 runs per over required at this stage to chase this down with 8 wickets in hand. You will fancy as a supporter of Darsaka Stars to win this match. But good bowling from the bowlers and chances being taken. Run out, a good catch. One moment is enough for the fielding side to come back in this match. And that's it. I was mentioning about one moment, that ball kept low, inside edge, onto the wickets, and happy Cam Goa Police. They were going steady here, both these players, and suddenly the ball stopped and that inside edge chopped onto the wickets. So Mahesh Rao, looking pretty good, has gone back in the pavilion. Important partnership broken here by the left arm orthodox Sadev Kanolkar. Felix Dias, the new batsman on the crease. So once again, left and right hand combination is continued here. Felix Dias also could have opened
for Darsaka Stars. Maybe the think tank, the captain had other ideas. They wanted someone at the middle order, lower middle order, to play alongside a batsman like Sanket. Once again, little quicker. The ball also bouncing, looking at the surface. Sometimes odd balls also keeps loose and also a little bit of spongy bounce. That's a good shot. No one there. That's a wonderful shot. Good sweep shot and no one patrolling that behind the square. And this boundary will certainly lift the spirit of not only Sanket but also the camp. At a time when the wicket is lost, you never want to bog down, because once you bog down, it adds pressure on the new batsman and also on the batsman on the crease. And that's exactly what Sanket has done. Found out that the ball was pitched outside the leg stump, and this was a safe shot. Moves the score to 70. This time an elegant. This is the best shot. This is the best shot of the day so far. It was pitched up and he played it beautifully, covering that spin up and over the covers for 4 runs. That's the class of Sanket Moraskar. So with that, boundary score moves on to 74 runs in 10. Ten overs, 74. And Goa Police very well knows, the whole team knows, the difference in this match might be Sanket Moraskar. The lad has represented Goa in under 25 category and has faced many of the good bowlers around, so that experience will certainly count here for Dharsaka Stars. His mere presence out in the middle is going to bring tremors in the camp of Goa Police. This time Felix, one of the most deceptive bowlers in and around Goa. Doesn't have that much of pace, but he moves the ball both sides. So if you can't pick him up from his hands, sometimes it might be difficult for you as a batsman. Oh, no idea. The ball, okay, I can understand it jumped a little bit, but he was very late. That was a quicker one, very nicely kept from the experienced man behind. Chandrakant Ghadi, the veteran, the experience, giving all the tips to all the bowlers. This time, driven down the ground, should be a single. So mixing it up well, and the pressure should build up on the batsman. It cannot happen that you bowl a one loose ball, they get a boundary of that, and whatever few dot balls have been bowled in that over, it negates the effect of that. The boundaries should be dried up, runs should be soaked up on the batting side. Otherwise, things becomes very easy till Sanket is there. Once again, beautifully bowled. Beautifully bowled here. Beating a very good batsman, left-hander. Ball going away, pitching in the right areas into the dark spot of the left-hander. Sam, very nicely played. Punch down the ground for a single.
Over has been pretty decent here from Ashok Rathod. Not given away too many runs, and 76 at the moment. Just 2 runs considered so far. Though this ball is very important here. This time this placed nicely, exactly what I had mentioned. The bold few dot balls, the pressure was mounting on the batsman, and he plays a good shot down the fine leg, square leg region for 4 runs. Once again, what could have been 2 or 3 runs, 6 runs have come off that. And with the 11 gone, it's 80 for 3. Oh, went for that slog sweep, thinking that the ball will come back in towards him as a left-hander. The ball went away. 3 men patrolling the deep at long on and deep mid wicket and deep square leg region. So again, is he going to show beautiful fielding? Good effort from the bowler himself. You got to live for your moment. Cricket is such a game, it's a live game, and you got to live for your moment. You got to stop everything and hope that that moment comes when you get that important wicket. This once again a beautiful shot. A fielder is there. Sanjay Naik. Can he stop that? Yes, he can very well stop. This is poor running between the wickets. Very poor running between the wickets here. This should have been easy 2 runs. In fact, they could have jogged for the second. I don't understand what they have done. They were watching each other rather than, maybe they were watching the ball rather than watching each other. And that costed them an extra run. In a crucial situation, in a run chase like this, every run what you get is important. And sometimes you get 2 runs without having to do any effort, and that was one scenario for that. Long time for Sanjay Naik to get towards that ball, and I thought I was watching Sanjay Naik rather than watching the batsman. I thought they might have run the 3 runs. In fact, they have taken just a single. Oh, once again, missed the ball racing towards the fence. A welcome boundary here by signal by umpire Aslam Sheikh. And reaction from the bowler says it all. The ball kept low and Ghadi also could not collect. It doesn't matter, we are chasing a pretty decent close match, close encounter. Every run that comes your way as a freebie will be taken here by Darsaka Stars. 86, the score moves on to 135 is the target. 12th over in progress. So again, wonderful sound of the willow. Good elegant player is Sanket. I've watched him playing many innings. Even in tennis ball, he's a handful for many of the bowlers around. So single to finish over number 12. 87 for the loss of 3. .48 runs required of 6 overs. It's the season of cricket in Goa. It's the season where Ranji matches are in progress between Goa and Jharkhand. Goa had taken a lead against Rajasthan in the first match where Suyash Prabhudesa scored a double ton and a century for Arjun Tendulkar. 5 wickets for Mohit Redkar. What an outing that was for Team Goa.
Eknath Kirkar and captain Darshan Misal was resurrecting the innings for Goa Ranji team. That's a shot, good punch, should get at least a boundary. We have to wait for the signal, and it has crossed the fence. Whether it crosses by an inch or crosses by meter, a 6 is a 6. The Sanket Molaskar has decided I have seen enough, and that was such an easy ball. He's strong on the leg side, and he doesn't want to miss an opportunity. You can't bowl a loose ball like this. Now 42 required of 35. Wait for the signal, chance of a run out, direct hit. Oh, direct hit would have taken him back in the pavilion. Direct hit was required for Goa Police. So leg by signal, and Bala Amit Kadekar, he knows how close this was. There was the moment. There was the moment of taking a wicket. This time down the leg side, slightly quicker. Sometimes in trying to bowl the quicker, your arm just bends and bowls down the leg side. Another leg by, 2 consecutive leg bys here, but the scoreboard is moving along. Very good resurrection from Goa Ranji team, although they could not cross over the score. Good score from Eknath and Darshan Misa, 73-71. Mohit Redkar played a handy knock of 39. In the end, Lakshya Garg handy 20. 362. Goa was bundled out. And 382 was the score of Jharkhand. So just 20 run slender lead. Never mind, a good performance. Very good performance. They are coming in the ranks to the better Ranji sides. Rajasthan were Ranji champions in last one of the years. This is outside edge, though up and over. He played it with hard hands, and it had enough power to go over for 4 runs, and that's 100 up for Darsaka Stars. So once they have got to the 100, now just 35 runs required. After completion of 13, it's 100 for 3. 35 runs required in 5 overs, 30 balls. Lots of spectators watching this live on AB25, hearing me, Harish Kakodkar, giving the live updates of an interesting match. Close encounter. Still the 4th semi-finalist spot is up for grabs. 35 runs required in 30 balls with 7 wickets in hand, but this is leather ball. Just 1 over. Still can change the course of the match. This man on your screens is the key for Darsaka Stars. Straight to the man in short covers. Apali Kalangutkar. Once again going for the slog sweep. Didn't get the connection, but gets the boundary. The pace of Apali does the rest.
He wanted to play it in the mid-wicket region, getting an inside part of the bat, running down towards the fine leg region for a boundary. 31 runs required now, 38. Oh, what an elegant shot. What an elegant shot. This is a treat to the eyes. This is a classic cover drive, specially lifted up in the air for that 6, and he gets the 6. That's the reason why I say when you got a classy batsman, elegant batsman, you don't want to miss out any opportunity to watch such great shots being played. Very nicely bowled, slower off cutter, dragged the length a little bit. But I guess the runs required for Sanket and Darsaka Stars have been taken already in this over. 10 runs so far from the first 4 balls. This time very nicely driven, the ball racing towards the fence for another 4 runs. He's peppering that covers region at will and at ease. Well, how can you blame the bowler? He just done nothing wrong. It's just sheer class batting. Sanket Moraskar is taking his Darsaka Stars closer towards the victory line. This over has turned out to be very costly. 114 for the loss of 3 in 14 overs. Just 4 more overs left and 21 runs required. What a shot. That's the slap. Oh, that's a classic shot here from Felix. Well, the fielding is also not going in towards the Goa police side. But I guess now they have decided that the asking run rate is less than 6 runs per over. Sanket has already done the job well in the previous over. Now Felix has already decided I'm going to cut loose. Sanket Moraskar is not out on 47. So now an outside edge, just a single.
Once again, another boundary. This is easy pickings here. Now, Goa Police have lost the plot, and 50 off for Sanket Moraskar. What a knock in the run chase. Magnificent innings from Sanket. Once again, good bounce there. Things are becoming too blink here for Goa Police. The hopes are going down. And Sanket Moraskar, after completion of 15 overs, the score is 124. So just 11 runs required of the 18 balls. Now it's a much easier task with 7 wickets in hand. This time played down the third man region for a single, just 10 runs required. So 2, 1 dot ball here. Once again, back-to-back dot balls. Nine runs required of 14 balls. Amir Kadekar comes, the pace spearhead. He has to do something different, some magic here to get Goa Police back in the race. Oh, cracking shot, but fielder is there in the extra cover, will get only a single. Just 8 more required of 13. Just a mere 2 shots from Sanket Moraskar can do the job. But he has played so beautifully calm and composed at the time when wickets were lost. 2 wickets were lost in succession. He held the fort, then Mahesh Rao went. And when he decided to go after, went after the bowling and got those boundaries as sixes, and the required run rate came down drastically.
Very sensible and composed innings here from Sanket in a run chase. And that's very much important for a youngster like him who is growing in stature. This innings will certainly give him a lot of confidence. Run chases are always difficult, and when you get a player like this who plays such a good innings in a run chase, is always to be appreciated. So one more over comes to an end, and it's just 7 runs required. The score at the moment is 128. 7 runs required in 12 balls. So Ashok Rathod once again. I don't think so. The way the fielders have been kept, they want to pick wickets here. Just if this way the things is going to continue, then they can finish it in style. They just hope that Sanket gives away wicket here in trying to go for a 6 and catches down the boundary line. They are just hoping for a miracle. This is good bowling and very good fielding coming quickly onto the ball. Still 7 runs required of 11. Match is still 80-20, 90-10 you can say in favor of Darsaka Stars. Oh, good ball. Very good ball. When a batsman has crossed his 50 and you can beat him in all his defenses, it has to be a good ball. Can he bowl a few more? Can he bowl a few more? What was the difference of this match? I'll just come to that point after this ball. Once again, good punch down the ground. Should be a single. Single it is. When the openers were going all out, great opening stand. Avinash Gauss with 47 and Swapnil Malik with 31. Everyone thought here they are certainly going to go past 160, 170. That was the least expected, and finally the bowling of Darsaka Stars packed their way back in this match, especially from Sankal Pednekar, who took 4 wickets, and that was the turning point of the match. 4 wickets for just 18 runs. This time they want to go for the second. Felix first wanted, he was low off the box and just gets a single. Sankal Pednekar's spell turned out to be the difference, and also definitely 5 runs required in 8 balls. 5 in 8, still an equation in favor of the batting side. That's in the air. That might be a catch. Oh, he has not seen the ball at all. This might be a catch. Maybe the sun rays are directly falling in his eyes. He could not gauge where the ball was in the air. And Sanket Moraskar will feel he's still lucky. Four runs of 7 balls. Is this match going to go in the last over? Is this match going to go in the last over? That's a good shot. So once again another single that will finish this over number 17. 132. 3 runs required in the last over. Who is going to bowl this over? Can a magic be created by the bowler? Can something different be done by the captain? Or is going to be an easy cakewalk in the last over? It was not a cakewalk as far as the whole match is concerned. They fought their way out to be in this situation.
What are the options he has? Apali Kalangutkar has got a 1. I think Apali is the one going to bowl, or they have to use a new bowler. Because 3 bowlers, Avinash Gaon, Samir Kadekar and Ashok Rathod, have completed the 4 overs. And the 3 overs from Saudev Khanolkar. So Apali Kalangutkar looks to be the only option at the moment. And at this situation, you got to be Sachin Tendulkar. Just ask the captain to give the ball in my hand and hope that you defend just 3 runs. And Sachin, I guess, he defended 6 runs twice. 6-7 runs won in Hero Cup against South Africa. Glenn Maxwell is the man who defends the lowest score. He had to defend 3, and he picks away 3 wickets of Pakistan team in that last over and defends the match, and Australia wins it by 1 run. That was the biggest heroic. Nobody has repeated that performance of Glenn Maxwell in that last over. Can Apali Kalangutkar be the Glenn Maxwell of Goa Police? So 3 runs to defend. Fielders closing in. Wide signal, wide signal. This is not what the captain wanted. You can see the error from behind the wickets. He never wanted to get the field to have been bowled such a wide down the leg side. This is much better. This was quicker. Like a pace spearhead, bowls the fast one. So 2 runs required of 5. Is it going to be wide? Yes, it is. This is very poor from an experienced cricketer. Well, I've seen him in Goa Premier League in tennis ball. Was the captain and bowled exceedingly and won for his team 6-6 Super Kings. Performs and bowls excellently throughout and bowls 2 wides. That's an anti-climax here. That's finishes the match. Tried a quicker bouncer ball and easily played by Felix Diaz, and finally a victory here for this team. Very good innings from Sanket Moraskar, takes them home, and a good cameo there from Felix Diaz, giving company to Sanket, and also from Mahesh Rao. That's how Darsaka Stars becomes the 4th team to go through to the semi-finals. Tomorrow morning it's going to be Salgaonkar Cricket Club versus Warriors tomorrow in the morning session, and in the afternoon session is going to be Nageshi Youth versus Dharsaka Stars. Very good teams. So semi-final and the final places will be up for grabs. Well, it was a difficult decision for the jury whom to give the man of the match. 2 men were in contention. One was Sankal Pednekar with 4 wickets at a time when Goa Police were going all guns blazing. Looked as if going to go past 160, 170, but just merely scored 134. And then it was Sanket Moraskar with a magnificent knock of 55 runs. He got a company from 2-3 players, but finally the jury has decided that it was the bowling performance of Sankalp Pednekar
Otherwise, things could have been difficult here for the run chase. What could have been 165, 170, it just remained on 134. So finally, Sankal Pednekar with 4 wickets for 18 is the man of the match. So Sankal, please come and take your man of the match prize. Sanket has played magnificently, no doubt about that. Rudrak Salgaonkar Bab, Rudrak Salgaonkar, Rudrak Salgaonkar Bab, Macha, your man of the match prize, Deepak, owner of City Thunders, City Town. So cash prize for Sankal Pednekar, a trophy and a jersey given by Deep Kerkar. Sankal Pednekar. Rudrak Salgaonkar, owner of City Town, giving the man of the match award to Sankal Pednekar. And it will be Rupesh Gaonkar from Malkane, highest bidded player in South Goa Premier League for 21,500 rupees. He is going to give the jersey which has been sponsored by Deep Kerkar. We'll see Rupesh in action in the biggest tennis ball cricket tournament in Goa. संकल बाब बरें परफॉर्मन्स जालें तुजें आनी एक टायम असो आशिल्लो की ओपनिंग स्टँड ऑलमोस्ट 90 रनाचो आशिल्लो आनी सगळ्यांक अशें दिसतालें की 165 170 जातालो सो तुजो गेम प्लॅन कितें आशिल्लो Wicket was bit too pace, so bowling with variation was very important. So variation and third effect padlo thesar. So that was my plan. Okay, what was the game plan since you told that there was variations? What are the special variations that you have? I have two variations. One is off cutter I put, and one is with creasing the use of crease, and that angle makes difficult. Okay, and I guess Sanket also played a very good knock because while chasing when you score 55 runs, I think it was creditable performance. If he had not stayed on the wicket, things could have been difficult for you. Yeah, it was very important knock because here chase is very difficult. So playing sensible was very important, and Sanket did that with help of Felix and Mahesh Rao and others also Shubham and also.
So it was a very important knock. We have seen many of the fast bowlers are turning out to be very costly in this tournament with they are being bettered all across, but you use the variations to good effect. So according to judgment of how you bowled, what tips are going to give to the other players from your team how to bowl on this wicket? See, every bowler has a different techniques, so they know better what they are good in at. So they will follow there. But suggestion is, it depends on the pitch what it gives back. So once you get to know the pitch, you can give the feedback that. Absolutely right. Reading the pitch is very important for a bowler, and you read the pitch absolutely right, and that's the reason why you are man of the match. Congratulations to you in the semi-finals and the further tournaments. Good luck. Till then, it's good night. शुभरात्री शब्बा करते तुमका सगळ्या बरी रात देऊ. फाल्या बरी दोन सेमीफायनल साळगावकर वर्सेस Warriors and Nageshi Youth versus Darsaka Stars in the second session. Till then, it's bye from my side.